हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, toothpaste, dentifrices, tooth powders, deodorants, antiperspirants, नेल पॉलिशेस, लिपस्टिक्स, परफ्यूम्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे डीआई का सिलेबस तो उसमें कॉस्मेटिक्स भी दिया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, cosmetics is also a part. So cosmetology, cosmeceuticals, इसमें भी combined. जैसे antiperspirant is a cosmeceutical, but deodorant is a cosmetic. So you should know the difference between these things. So zirconium, aluminum, these are most commonly used antiperspirant agents. So cosmetic products are any, according to the section 3AA, any article intended to rubbed, poured, sprinkled, sprayed on the skin. Rubbed, poured, sprinkled, or sprayed on the skin. Correct? So there is cosmetic regulatory, which is BIS, Bureau of Indian Standards. This is one of the most common standards for the BIS. Yes, कसा आहे पब्लिक, कसं काय? पटकन चॅट बॉक्स मध्ये टाका काय चाललंय तुमचं. How are we all doing? So cosmetics are skin care, hair care, oral care, hygiene, dental care. So we have dental powders, dental paste, dentifrices. Skin may we have baby powder, face powder, creams, cold cream, which is a W by O emulsion, vanishing cream, which is a W by O by W emulsion, right? Lipsticks in which there is laddering test and all that is performed, astringent protein precipitants, lotions and all which can be there. So these are all the classification of cosmetics. Either they are classified on the basis of the dosage form, like emulsions, powders, sticks, oils, jellies, pastes, soap, solutions, or aerosols. They can be either soaps, solutions, aerosols, paste, jellies like petroleum jelly and all, oils, sticks, powders, and emulsions. All right. Is it clear to all of you? Are we all clear till here? Any queries, any doubts? So cosmetic is any substance which is intended to be rubbed, poured, sprayed, sprinkled on the skin. So labeling, manufacturing, import, regulatory concerns are as per the BIS, Bureau of Indian Standards, and also it sets the standards for Schedule S. So Schedule S is for drug, and if you see the standards for cosmetics, and also if you see M1, M2, M3, good manufacturing practices for cosmetics are M1. So Schedule M1, Schedule S, and Bureau of Indian Standards. Schedule S, Schedule M1, and BIS. These three standards together are responsible for the good manufacturing practices and standards for cosmetics. Okay, so any cosmetic is not of standard quality if it is misbranded or spurious in nature, that is not labeled in a prescribed manner, or it consists of substance which is of inferior quality. Okay, so you should know about this. You must know about this. As per the rule 21 of the drug and cosmetic, all cosmetics products are imported for sale in India needs to be registered with the licensing authority. Loan license, manufacturing license, import, export, repacking, restricted. Which kind of license you are applying for? Is it a loan, restricted, repacking, manufacturing? Which kind of license you are exactly targeting? All right. So that is what is for. Then um, 2 ppm of arsenic is calculated as arsenic trioxide. 20 ppm of lead is calculated as lead. Okay, and list of colors, coal tar dyes which can be used in cosmetics are in the Schedule Q. List of coal tar dyes, colors, pigments which can be useful in your cosmetics are in the Schedule Q. So, Schedule M1, Schedule S, this, Schedule Q, these are some of the very, very important schedules that must be at the tip of your tongue, at the tip of your fingers. Offences and penalties. So, 3 years imprisonment if the spurious cosmetic is being prepared. Subsequent intervention can lead to 5 to 10 years of jail.
if again and again you're repeating the same mistake. All right. So if you are interested in purchasing these notes, you can contact me on the number 8655067959. Me or my team, one of us will definitely send you the notes. It is just at rupees 349, and you will get 106 PDFs. 106 PDF at rupees 349. 106 PDF at rupees 349. Okay, so you can just give a call on this number. Definitely, we will reach out to you. All right. Are we all clear till here? Any queries? Any doubts? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते चलिए अगर हमें कोई डाउट है तो. If you have any doubt, quickly type in the chat box. Quickly type it down in the chat box. All right. If you have any queries, any doubts. Moving on to the herbal formulation, herbal cosmetics, and traditional herbal knowledge. So, when we talk about herbal formulations, we have phytozones, which is a novel drug delivery system. Phytozones, traditional herbal dosage, and modern normal herbal dosage, like herbal syrups and all. So, we have Asava, Arishtha. Asava is an infusion, Arishtha is a decoction. Asava is an infusion, Arishtha is a decoction. Herbal syrups are prepared by incorporating sugar solutions into plant extracts by infusion decoction. Alright. Honey is the most commonly used sweetening agent because it also acts as a preservative. What are the evaluation tests that you will do for the first of all is microbial limit, pH, antimicrobial activity, alcohol content. These are 3 to 4 most common tests that you prefer for the 3 to 4 most common tests which you prefer for the syrups. So you have raspberry, sarsaparilla, cherry, glycyrrhizia, which is a demulcent for cough. All right. So you must know them. Then we have herbal tablets, which are prepared from herbal extracts and all. Herbal tablets which are prepared, and they are prepared by dry granulation or wet granulation depending upon the type of ingredient, botanical phytoconstituent being used. Okay, so if it is a little sensitive to moisture, hygroscopic, you will avoid wet granulation. You will go for dry granulation or direct compression. एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते चलिएंगे कि हाउ आर वी ऑल डूइंग. हमें क्विकली चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं देंगे, ये सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, अगर आप इसे प्यार नहीं देंगे, एक लाइक फ्री का बनता है भाई. मैं इतना वक्त निकाल के इतना पीपीटीज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतनी चीज़ें आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू. ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ अ प्यारा सा लाइक और एटलीस्ट शेयर. इफ़ यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और प्रिपेयरिंग, बिकॉज ये सेशंस ऐसे आप यूजुअली एमसीक्यूज आपको कहीं भी मिल जाएंगे. आपको अगर बहुत सारे चैनल जो एमसीक्यू करवा रहे हैं, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट फंडामेंटल से मिले तो मैंने अब तक क्यूबीडी, डीओई, है ना, आपको कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लामाइडिया, हेपेटाइटिस, अब तक मैंने आपकी ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल सॉल्यूशंस, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है. तो आपने बस मेरे साथ जुड़ना है माय डियर, जुड़ते रहना है माय डियर, बहुत ज़रूरी है. हर्बल क्रीम में पीएच है, विस्कोसिटी है, रियोलॉजी है. पीएच है, विस्कोसिटी है, रियोलॉजी है, फ्लो, करेक्ट. और अगर इमल्शन होगा तो इमल्शन के टेस्ट, डाई, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी. सो आपको कोई भी फॉर्मुलेशन पूछे ना, तो उस फॉर्मुलेशन का एक्सीपिएंट
और उस फॉर्मुलेशन का यूज, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, एक्सीपिएंट एंड यूज, excipient and use. You must know the use as well as the excipients. Which जैसे herbal syrup, herbal solution, herbal suspension, what's the uses and what are the different excipients and what are the different evaluation tests? How do you evaluate it? See, रात के बज रही हैं 9, बट आपने मेरे साथ जुड़ते रहना है माय डियर, थकना नहीं है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आगे बढ़ते रहना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स विच यू विश टू आस्क? कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े। कैन वी मूव फॉरवर्ड? हर्बल क्रीम्स, सो क्रीम्स ऐसे प्रेपरेशन है जो कि O by W या W by O होते हैं, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम्स। तो इसमें दो फेजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया। देन वी हैव हर्बल मिक्सचर्स। हर्बल मिक्सचर्स जो है वो आपके या तो भस्म चूरन हो सकते हैं, भस्म चूरन हो सकते हैं, ओके। Bhasma Churan. And what is the difference between Bhasma and a Churan? Bhasmas are powdered substances which are obtained by calcination. Churan are preparations which are powdered and there are multiple substances mixed together. Kayam Churan, Triphala Churan, Trikatu Churan. Correct? Bhasma, Swarna Bhasma, Rajat Bhasma, Tamra Bhasma. राइट, स्वर्ण, रजत, तमस। चूर्ण में त्रिदोष, आपका त्रिफला चूर्ण, हरडा, बहरा, आंवला। करेक्ट, हरडा, बहरा, आंवला। त्रिकाटू, ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर। सो फाइटोसोम्स आर प्रेपरेशंस व्हिच आर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इसमें एक्टिव हर्बल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इन द फॉस्फोलिपिड्स is in the phospholipids. Active phytoconstituent which is the herbal ingredient is in the phospholipids, that is phytosomes. So you have choline head which is water soluble and fat soluble phosphatidyl layer. Phospholipids, you know, phosphatidyl choline, phosphatidyl serine, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidyl ionositol, ये सारे अलग अलग टाइप्स के फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो ये आपके यूजुअली यूज होते हैं कोई भी लाइपोसोम, नाइट्रोसोम, वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, सो उसमें हम इनको यूज करते हैं मोस्टली माइंड। सो लाइपोसोम्स आर लिपिडिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। नायोसोम्स आर ऑल्सो phospholipids, but they contain non-ionic surfactant. They contain non-ionic surfactant. So role of phospholipid, role of cholesterol in these agents, activities you must know. You must know the role of all of these. Okay? Role of excipients, role of all the excipients, and yeah, you have covered the novel drug delivery system also. We have covered the normal drug delivery sessions also. ठीक है, in which we have covered the novel drug delivery. What did we cover? We covered multiple things in novel drug delivery, like the gastrointestinal drug delivery system, raft forming, microsphere, balloon, low density, high density, raft forming. Then we covered about the other systems also. Correct? What are the other systems? Transdermal drug delivery system, mucoadhesive drug delivery system, OcuSearch, LaCeSearch. So I hope कि you have seen the previous class and I request you all, अगर आप तगड़ी तैयारी कर रहे हैं GI, if you are preparing genuinely for DI, then let me tell you that these classes are really really important for you। जो मैं classes free में लाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें as per जो आपका syllabus, ये देखिए syllabus में आपका क्या दे रखा है, cosmetics governed by the BIS standard and the Drug and Cosmetic Act, the Drug and Cosmetic Act and the BIS standards, skin care, hair care, oral care products like creams, sunscreen, hair care में shampoos, conditioners, oral care में toothpaste, mouth washes. So skin care, hair care, oral care, all of these products in cosmetic sciences involving drug and cosmetic and BIS standards. Then हर एक formulation का excipient evaluation tests uses.
excipients, evaluation tests and uses. ओके एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो है वो एज पर आयुष आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी नेचुरोपैथी होम्योपैथी जो रेगुलेटरी है एफएसएसएआई फूड्स की different formulation like bhasma, churan, asava, arishta, herbal syrups, herbal mixtures, compound mixtures, correct? Herbal formulations like which are novel, so phytozoans. तो अब तक आपको आज के इस सेशन में कॉस्मेटिक साइंस के जानने मिला व्हाट इज हेयर केयर ओरल केयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको जानने मिला रिगार्डिंग हर्बल सिरप्स हर्बल मिक्सचर्स एंड द एक्सीपियंट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं लिपिडिक सिस्टम वगैरह के फाइटोजोम्स के what are the evaluation parameters for herbal syrups and all राइट तो ये सारी चीज़ें आपको यूजुअली जानने मिलेगी ठीक है देन आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स भी एक टॉपिक है जो कि मैं अलग से करवाऊंगा सो बेसिकली यही आपके हर्बल कॉस्मेटिक्स में आएंगे स्किन केयर हेयर केयर ओरल केयर में स्किन केयर में आपके प्रोडक्ट्स देखिए कोकोनट ऑयल जोजोबा ऑयल ठीक है तो ये कहाँ क्यों यूज़ होते हैं तो ये एक मॉइस्चराइज़र है जोजोबा ऑयल ये आपका स्किन का नेचुरल पीएच को बैलेंस करता है हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है ना तो इस तरीके का वन लाइनर यूज़ तो ये नोट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप चाहे यू कैन कॉन्टैक्ट मी डेफिनेटली ये नोट्स आपको मिलेंगे एंटी एजिंग सो एंटी एजिंग में आपके पास कैरेट है जिसमें विटामिन ए है बीटा कैरोटीन है गिंगो बाइलोबा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है देन यू हैव हेयर केयर प्रोडक्ट्स जिसमें हेना लॉसोनिया इनर्मिस एंटी फंगल एंटीबायोटिक शिकाकाई which is having a very good ability to wash the hair improve the hair growth amla so amla is used to treat the hair and the scalp problems the scalp and the hair problems so oral care में we have clove oil oral eugenol is a very good antiseptic and also for tooth extraction and all you can use that clove oil for whenever especially there is a dental extraction or tooth surgery moringa orifera which is um, drumstick so moringa is also very good antibacterial activity tulsi ossimum sanctum herbal excipients so herbal excipients must be biodegradable biocompatible safe affordable effective economic non-toxic in nature हे तुम्ही विसरू नका याला पटकन बुकमध्ये लिहून टाका दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हर्बल स्वीटनर स्टीविया तो स्टीविया रिप्डाना से आता है ये ठीक है और ये कितने 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर्स होता है रिबोसाइड्स एंड स्टीवियोसाइड्स glycyrrhizine licorice 50 to 150 times sweeter as cane sugar natural binders pectin guar gum काफ़ी नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड है पेक्टीन तो ठीक है नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है पेक्टीन तो देन हर्बल सिरप्स तो सिरप्स कैसे बनती है भाई सिरप्स में आप डालते हो लिकरिस जिंजर हनी वसाका तुलसी टर्मरिक है ना यही सब डालता है वैसेसीन जो आपके वसाका है आटा तोड़ा वसाका वेरी गुड फॉर कॉफ ग्लिसराइजिन जिंजर दे आर ऑल गुड फॉर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और कॉफ कोल्ड राइनाइटिस बेसिक एंड इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक कंडीशंस हर्बल टैबलेट्स तो भाई ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाओगे वेट ग्रेनुलेशन से बनाओगे टैबलेट का पीएच द टैबलेट का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी organoleptic characteristics like the color odor taste hardness friability dissolution disintegration all of these characteristics like phytosomes so I told you phytosomes are nothing but preparations of phospholipids encompassing the herbal drug ka course so we have curcumin phytosomes phosphatidylcholine layers and all are being formed and they are very good having good bioavailability and a better targeted action that is why you prefer these agents okay so herbal cosmetics can be classified as herbal binders glidants diluents disintegrants है ना viscosity modifiers pH balancers there are products for hair care skin care oral care herbal syrups herbal mixtures herbal tablets phytozomes mostly इन्हीं से क्वेश्चन आएगा एंड regulations like the schedule S schedule Q schedule M1 BIS आयुष FSSAI licenses
Nothing beyond this will be asked in your paper. मोस्टली यहीं से आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे, क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट। एंटी एजिंग कौन सा ड्रग क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा बोटानिकल का क्या यूज़ है, विच वन इज़ अ इमोलिएंट, विच इज़ अ स्टिमुलेंट, विच इज़ अ मॉइस्चराइजर, विच इज़ अ हाइड्रेटिंग एजेंट, विच इज़ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट। Correct. So you should know about this. You must know. This is bare minimum expected from you, that you are completely aware about all of these terminologies. You must be aware about these terminologies. All right. So that is phytosome preparations, bifunctional phosphatidylcholine, where phosphatidyl portion is lipophilic and the choline portion is hydrophilic. Choline is hydrophilic, phosphatidyl is lipophilic. So that's it for today. Thank you so much for joining. In tomorrow's class, we will be coming up with antimicrobial resistance, and we will be covering up with the very important antimicrobial stewardship program. So stay tuned and do like, share, subscribe our channel for more such upcoming videos on the um, Drug Inspector Maha series.